Okay, so good morning, everyone. So now today I am before you all bringing the solution to the questions of economy of previous year paper of 2017. So we have already covered, as you all know, that we have already covered paper of 2015, 2016. So today we are starting with the paper of 2017. So I will be giving you let's start with the question first. So this is the first question before you. A very simple question and a very important one. So the question is, the term core banking solution is sometimes seen in the news. Which of the following statement best describe this term? So core banking solution के बारे में पूछा है ये question में. So in this core banking, what is core banking solution? So you see, there are three statements. It is a networking of a bank's branches which enables customers to operate their accounts from any branch of the bank on its network, regardless of where they open their accounts. It is an effort to increase RBI's control over commercial banks through computerization. It is a detailed procedure by which a bank with huge non-performing assets is taken over by another bank. So यहाँ पे हम लोगों को तीन स्टेटमेंट दिया है and हम लोगों को पूछा है which one is the correct. Let me first tell you something about core banking solution. आप लोगों ने सभी ने सुना होगा एक सिस्टम है जिसको CBS कहते हैं. बैंक में एक सिस्टम होता है जिसको CBS कहते हैं. So ये CBS is nothing but your core banking solution. So इसमें under this system क्या होता है? Under this system, suppose आपका बैंक अकाउंट है दिल्ली ब्रांच ऑफ SBI. सपोज आपका एक बैंक अकाउंट है SBI की दिल्ली ब्रांच में एंड आपने वहां पे किसी भी कारण अकाउंट ओपन किया था SBI में. अभी आप उड़ीसा में हैं, आपके पास आपका डेबिट कार्ड है, चेक बुक है, पासबुक है, सब कुछ है. सो नाउ आप क्या चाहते हो कि आप अभी नहीं रहते हो, आप दिल्ली में नहीं रहते हो, तो आप रहते हो उड़ीसा में. सो आप क्या चाहते हो कि आप अपना जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है SBI में आप उड़ीसा से करना चाहते हो. सो बैंक आपको अलाउ करते हैं. आप उड़ीसा में रह के किसी भी ब्रांच ऑफ SBI में जाके पैसा डाल सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो एंड आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो. आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है. सो ये जो फैसिलिटी बैंक देते हैं टू डू द बैंकिंग फ्रॉम एनी ब्रांच विद इन इंडिया, इसको कहते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन. सो दिस इज ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन. आप इंडिया में कहीं पे भी रहकर आपका किसी भी स्टेट का कोई भी बैंक का अकाउंट यू कैन ट्रांजैक्ट, आप चला सकते हो. आप अगर मुंबई में हो तो मुंबई में भी आप क्या कर सकते हो, अपना जो SBI का अकाउंट है आपका, तो उस मुंबई ब्रांच में जाके आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो, डिपॉजिट भी कर सकते हो. दिस इज द फैसिलिटी ऑफ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन. सो आप लोगों को क्या लगता है ये जो तीन स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, which one will be the correct? A1. So statement 3 में देखिए, it is a detailed procedure by which a bank with huge non-performing asset is taken over by another bank. So non-performing asset क्या है? जो खराब loans होते हैं. All of you know that loan is a asset of the bank and non-performing asset is something जो खराब लोन होते हैं बैंकों का, उसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट. तो एक बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट दूसरा बैंक लेगा. So this is not core banking solution.
Statement 2, it is an effort to increase RBI's control. Okay, so statement RBI's control over commercial banks through computerization. So computerization is also not related to core banking solution. वन होगा ए. So हम लोगों ने क्या देखा कि दोनों गलत है. So इससे हम लोगों का क्या बनता है? A is the answer. So correct answer is only A. So core banking solution क्या है? It is a networking of banks branches which enables customers to operate their accounts from any branch of the bank on its network, regardless of where they open their account. कहीं भी खोल सकते हैं account, but now come to this question. India's ranking in the ease of doing business index is sometimes seen in the news. Which of the following has declared that ranking? So question ने क्या पूछा है कि ease of doing business index, ये जो ranking देते हैं countries को, कौन publish करता है और या तो कौन declare करता है? So what will be the correct answer? World Bank. World Bank. So your correct answer will be, sorry, World Bank. Option C is your correct answer. World Bank will be the correct answer here. Not World Economic Forum, but World Bank. World Economic Forum, gender gap. Yes, gender gap report is prepared by World Economic Forum. So ease of doing business is an index published by World Bank. It is an aggregate figure that includes different parameters which define the ease of doing business in a country. Now, what is ease of doing business? So ease of doing business है क्या? I want everyone to comment the answer. Okay, आप लोग comment कीजिए. So world ease of doing business means the ability to do business easily. इंडिया में बिजनेस करना कितना इजी है? सो ऑन द बेसिस ऑफ दोस द रैंकिंग इज गिवन कि जो मतलब जो टॉप में रहता है मतलब उस कंट्री में बिजनेस करना ज्यादा इजी है कंपेयर टू इंडिया. सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब जिस कंट्री में इजीली बिजनेस कर सकते हैं. सो इट वाज रैंक अपॉन दैट पैरामीटर. Come to question number 3. So it is again related to your monetary policy question. What are the purpose of marginal cost of fund-based lending rate, that is MCLR, announced by RBI? So MCLR is your marginal cost of lending rates. So MCLR is your marginal cost of lending rates, and what is the purpose of this? What is the purpose of this? So marginal cost of lending rate, ये क्या पर्पस सर्व करते हैं? इट सर्व्स द पर्पस ऑफ लेंडिंग लोन का इंटरेस्ट रेट है ये. एक्चुअली होता क्या है जब बैंक मतलब अभी बैंक क्या करते हैं, बैंक नाउ गिव्स लोन ऑन MCLR. सो व्हाट इज MCLR? So MCLR is something at which customer can take loan from the bank. That is your marginal cost of fund-based lending rate announced by RBI. So statement देखते हैं. These guidelines help improve the transparency in the methodology followed by banks for determining the interest rates on advances. So statement 1 ने क्या कहा है? MCLR में क्या होता है? जो रेट बैंक्स लोन पे लगाते हैं या तो बैंक रेट कैलकुलेट करने का जो मेथड है
बैंक्स जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं उसमें जो मेथड यूज करते हैं, दिस मेथड बिकम्स ट्रांसपेरेंट। आप लोगों को अगर MCLR, सपोज आप लोग बैंक में जाते हो लोन लेने के लिए, अगर बैंक कहते हैं कि MCLR कितना है, सपोज कहते हैं कि MCLR इज 10%, सो आप लोगों को दिखा देगा वो लोग कैसे 10% होता है। तो MCLR इज योर डिपेंड्स, MCLR रेट जो होता है, सपोज 10%, अगर 10% है MCLR रेट, यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होगा, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, प्रॉफिट ऑफ द बैंक। बैंक को जितना प्रॉफिट चाहिए वो परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द बैंक, प्रॉफिट परसेंट ऑफ द बैंक। जो MCLR मीन्स इज नॉट डायरेक्टली योर बैंक रेट और रेपो रेट। बैंक रेट सपोज RBI से लाते हैं 7% पैसा, एंड बैंक को चाहिए 3% प्रॉफिट, सो MCLR कितना हुआ अभी, 10%। सो MCLR is a transparent. These guidelines help ensure availability of bank credit at interest rates which are fair to the borrower as well as the bank. So MCLR क्या, MCLR में और एक चीज देखा जाता है, MCLR is different for different loan. हर लोन के लिए MCLR अलग होता है। आप लोग देखना तो कि कार लोन में you will get maybe 11%, हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट maybe 8%, एग्रीकल्चर लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आते हैं 7%, maybe 6%। सो हर लोन का ये अलग अलग क्यों होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि it depends upon your MCLR, मतलब कौन सा लोन कितना रिस्की होता है ये भी देखते हैं। कार लोन ज्यादा रिस्की है, क्योंकि क्या होता है, कार लोन अगर बैंक कार लोन दे देते हैं तो जो आदमी वो कार खरीदते हैं वो कार आदमी को डिलीवर किया जाता है, सो कार लोन इज मोर रिस्की। हाउसिंग लोन में क्या होता है, अगर हाउसिंग लोन देते हैं किसी को तो उसका जो हाउस है वो मॉर्गेज रहता है विद द बैंक। अगर वो आदमी किसी भी कारण लोन वापस नहीं करते हैं, देन बैंक कैन टेक द हाउस। एंड एग्रीकल्चर लोन क्यों सस्ता होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर लोन में गवर्नमेंट सब्सिडी देते हैं, इट इज अ लोन फॉर प्रायोरिटी सेक्टर डेवलपमेंट। सो बैंक का रिस्क है कार लोन से भी, और एक लोन है जो ज्यादा रिस्की है, वो है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन, यहाँ पे आपको मोर देन 13% मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मोर देन 13%, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सिक्योरिटी नहीं होता है, नथिंग इज मॉर्गेज्ड हियर। सो पर्सनल लोन इज मोर रिस्की। सो पर्सनल, आप लोग अगर कभी बैंक में गए हो तो देखोगे लोन के लिए, देखोगे कि पर्सनल लोन का रेट ज्यादा होता है, कार लोन का और थोड़ा ज्यादा, हाउसिंग लोन का थोड़ा और ज्यादा, एंड एग्रीकल्चर लोन ऐसे नीचे आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द रिस्क, सो हियर टू स्टेटमेंट, these guidelines help improve the transparency in the methodology. So यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है कि बैंक ने कैसे 10% लगाया, very much transparent. So here option 1 is correct. So ये MCLR क्या करते हैं, MCLR अलग अलग रखते हैं। So MCLR पर्सनल लोन में ज्यादा MCLR है, कार लोन में और ज्यादा, क्यों, क्योंकि कार लोन, पर्सनल लोन, ये सब लोन ये हर कोई नहीं लेते, ये हर किसी मतलब जिसको मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग लेगा कार लोन। बट हाउसिंग लोन सेम थिंग, हाउसिंग इज अ प्रायोरिटी सेक्टर, बट देन ऑल्सो हाउसिंग लोन कौन लेगा, दोज हु कैन अफोर्ड, अदरवाइज वो आपका अपना जो
फादर का प्रॉपर्टी है वहीं पे रहेगा, बट अगर उसका इनकम ज्यादा है, वो पे कर सकता है, देन ही विल गो फॉर अनदर हाउसिंग। सो यहाँ पे क्या दिया है, फेयर टू द बोरोअर, बोरोअर भी अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। देखिए पर्सनल लोन लेगा तो ज्यादा इंटरेस्ट बैंक लेगा। आप अगर एग्रीकल्चरल लोन, आप अगर एक फार्मर हो, आपको अगर लोन चाहिए, देन आपको यहाँ पे मैं अगर सपोज आई एम अ बैंकर, आई एम अ बैंक एंड एन फार्मर कम्स टू मी आस्किंग फॉर लोन, इफ आई चार्ज हिम 13% एग्रीकल्चरल लोन, वो कभी भी लोन नहीं ले पाएगा, बिकॉज फार्मर इज नॉट एबल टू पे 13%। वो शौक से नहीं आएगा एग्रीकल्चर लोन लेने के लिए, वो मजबूर होके आया होगा। तो बोरोअर के साथ फेयरनेस भी रखना चाहिए, और बैंक को भी, मतलब बैंक शुड ऑल्सो बी सेफ, क्योंकि कार लोन, पर्सनल लोन नो सिक्योरिटी, उसको अगर हम 7% में दे देंगे तो हर कोई आके पर्सनल लोन ले लेगा। सो कहाँ से, अगर कोई डिफॉल्ट करते हैं तो हम कहाँ ढूंढेंगे इतने बड़े इंडिया में, और कोई सिक्योरिटी भी नहीं मिलता। लेकिन हाउसिंग लोन हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि वो जो हाउस है वो मॉर्गेज रहता है। सो एंड कार लोन का, कार भी मॉर्गेज रहता है विद द बैंक, कार भी मॉर्गेज रहता है, बट कार क्या होता है, कार कैन बी सोल्ड, वो आदमी जिसने खरीदा था वो कार सोल्ड कर सकते हैं, वो इंडिया के दूसरे स्टेट में जाके रह सकता है। सो एनीथिंग कैन बी डन विद द कार। लेकिन हाउस को क्या, हाउस को सपोज उड़ीसा में है, उड़ीसा वही हाउस को, जो हाउस मॉर्गेज है उसको लेके वो मुंबई नहीं पहुंच सकते। सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर। सो एमसीएलआर का ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है। सी, MCLR will be calculated after factoring in bank's marginal cost of fund. So marginal cost of fund is the interest at which banks borrow money. बैंक किससे बोरो करते हैं, आरबीआई से। सो आरबीआई से बोरो करेगा, बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी और उसके साथ जो रिस्क है, मैंने बोला था ना कि जो लोन ज्यादा रिस्की है वहां पे ज्यादा परसेंटेज होगा। एग्रीकल्चर लोन, हाउसिंग लोन थोड़ा कम रिस्की है, क्योंकि एग्रीकल्चर लोन में गवर्नमेंट सब्सिडी दे देते हैं, हाउसिंग लोन में हाउस मॉर्गेज रहते हैं, सो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। सो जितना ज्यादा रिस्की होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है लोन का। सो एमसीएलआर रिवाइज्ड मंथली, एमसीएलआर सेम नहीं रहता है, चेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि एमसीएलआर में क्या इंक्लूड है, रेट एट विच बैंक बोरो मनी, बैंक ने जिस रेट में पैसा लाया है आरबीआई से, अगर वही चेंज हो जाता है तो रेपो रेट, बैंक रेट, अगर वो चेंज होगा तो एमसीएलआर भी चेंज होगा। सो एमसीएलआर का वो लोग बैंक पब्लिश करते हैं, और ये क्या है, ट्रांसपेरेंसी इन कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी। सो एमसीएलआर अगर आप लोग बैंक में लोन लेने जाते हो और अगर आप लोग पूछते हो कि हाउ डिड यू कैलकुलेट दिस एमसीएलआर, सो वो आप लोग को दिखा देगा कि कैसे पर्सनल लोन में 13% बनते हैं, कैसे हाउसिंग लोन 8% में आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एमसीएलआर. Okay, now come to next question. With reference to Financial Stability and Development Council, consider the following statement. So, it is an organ of Niti Aayog. It is headed by the Union Finance Minister. It monitors macroprudential supervision of the economy. So, Financial Stability and Development Council was formed much before the Niti Aayog. Niti Aayog was formed on 2015 January. So FSDC जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल है, वो नीति आयोग से बहुत पहले डेवलप हुआ।
सो ये नीति आयोग का ऑर्गन नहीं। सपोज ऐसा भी है कि वी डोंट नो द अदर टू स्टेटमेंट, हम लोग को पता नहीं है। लेट्स सी इफ वी कैन एलिमिनेट और नॉट। सो जैसे स्टेटमेंट नंबर 1 गलत होता है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। फिर भी हम लोगों के पास कितना ऑप्शन बचा? 2 ऑप्शन अभी भी बचे। सो हम लोगों ने क्या देखा कि 1 और 2 गलत है, मतलब कौन सा करेक्ट है? 1 और 2 गलत। सो 1 और 2 ओनली, ये गलत है, मतलब 3 इज करेक्ट। सो मतलब 3 इज करेक्ट। नाउ लेट अस सी इफ 2 इज करेक्ट और नॉट। Not correct. 2 is correct, so it is headed by Union Finance Minister. Okay, now do one thing. Let me give you the explanation first. You see, chairman of the council is the finance minister. So we all know कि chairman कौन है? Finance minister है. So option 2 is correct. So option 2 जब correct हो जाता है तो 3 only eliminates. So what is left with us? Only option C. Statement 3 monitors macroprudential supervision of the economy. ये suppose we don't know, suppose पता नहीं है हम लोगों को, then also by taking some knowledge we can solve this question. See, with a view to strengthening and institutionalizing the mechanism for maintaining financial stability, enhancing inter-regulatory coordination, and promoting financial sector development, the Financial Stability and Development Council was set up by the government as the apex level forum in December 2010. So 2015 में आया था नीति आयोग, so it was established in year 2010. That is much before Niti Aayog. So that's why statement 1 was wrong. The chairman is finance minister, and RBI, SEBI, PFRDA, IRDA, FMC, these are the member of this FSDC. So without prejudice to the autonomy of regulators, the council monitors macroprudential supervision of the economy. डायरेक्टली दिया है, देखिए, मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी इंक्लूडिंग फंक्शनिंग ऑफ लार्ज फाइनेंशियल conglomerates and addresses inter-regulatory coordination and finance sector development. It also focuses on financial literacy and financial institutions. So अगर हम लोग FSDC के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, एटलीस्ट नो कि वो कब एस्टैब्लिश हुआ था, चेयरमैन कौन है, तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इजीली. Okay, move on to question number 5. With reference to Agenda 21, sometimes seen in the news, consider the following statement. So statement number 1, it's the Global Action Plan for Sustainable Development. So Agenda 21 अभी क्या है? Now is Agenda 30. अभी जो चल रहा है वो है Agenda 30. So ये क्या है? ये एक एक्शन प्लान है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये 2017 का था, so it was Agenda 21. So option statement number 1 is correct. Now come to statement number 2. It originated in the World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg. So statement number 2 is wrong. Why wrong? I will have to justify. मैंने तो कह दिया कि statement number 2 is wrong. You see, ये Art Summit रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1992 में हुआ. हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? ये कब हुआ था? वर्ल्ड समिट. सो यहाँ पे क्या दिया है? वर्ल्ड समिट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग.
बट ये हम कब हुआ था? आर्ट समिट, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील. सो स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग. सो करेक्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन ए, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर. सो देखिए, ये एजेंडा 30, यहाँ पे 21 को हटा के 30 भी दे सकते हैं. सो सेम आंसर होगा, सेम आंसर होगा. यहाँ पे अगर 21 नहीं देके अगर 30 भी देते हैं, then also your answer will be same. Only statement 1 is correct here. Okay. So the term basic erosion and profit shifting, basic erosion and profit shifting is sometimes seen in the news in the context of. term क्या है? Basic erosion and profit shifting. So देखिए, यहाँ पे दो कंसेप्ट. एक है बेसिक इरोशन. सो इरोशन वर्ड सुनते ही हम लोग को क्या लगता है कि मे बी इट इज रिलेटेड टू फ्लड, मे बी इट इज रिलेटेड टू माइनिंग, मे बी इट इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. सो फ्लड हो या माइनिंग हो या एनवायरनमेंट हो, उसके साथ प्रॉफिट शिफ्टिंग का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि फ्लड से कोई प्रॉफिट होता नहीं है. एनवायरमेंटल कॉस्ट अगर है, इरोशन मतलब समथिंग बैड, नॉट गुड. इरोशन इज नॉट गुड. सो अगर इरोशन इज यूज्ड इन योर बैड सेंस, सो एनवायरनमेंट के साथ अगर हम लोग कुछ बैड सेंस का वर्ड यूज करते हैं तो प्रॉफिट डेफिनेटली नहीं होगा. एंड माइनिंग के साथ भी अगर इरोशन यूज करते हैं तो प्रॉफिट नहीं होगा. सो बेस्ड ऑन दिस नॉलेज, यूपीएससी एग्जाम में होता क्या है, ऐसा ये सब क्वेश्चंस यूपीएससी का है. सो यूपीएससी लेवल क्वेश्चंस में होता क्या, यू शुड हैव नॉलेज ऑन एवरी सब्जेक्ट, एटलीस्ट अ लिटिल नॉलेज. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी तक ना ही इकोनॉमिक्स पढ़ा है हम लोगों ने, ना ही ज्योग्राफी पढ़ा है, फिर भी थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते हैं. बेसिक इरोशन माइनिंग रिलेटेड हो सकता है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन रिलेटेड हो सकता है, या तो फ्लड रिलेटेड. अगर ये तीन माइनिंग अगर करेक्ट है, अगर हम फ्लड को भी लेते हैं, अगर हम एनवायरनमेंट कॉस्टिंग भी लेते हैं, फिर भी इससे ये प्रॉफिट जो वर्ड यहाँ पे है, इट डज नॉट रिलेट. सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि माइनिंग, फ्लड या एनवायरनमेंट रिलेटेड टर्म है ही नहीं है. सो ऑप्शन ए में देखिए माइनिंग ऑपरेशंस, डायरेक्टली रॉन्ग. ऑप्शन डी में किसके बारे में बात किया है? एनवायरमेंटल कॉस्ट. सो ये भी रॉन्ग. तो रह गया बी एंड सी. एक्सप्लॉइटिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस ऑफ ए कंट्री बाय मल्टीनेशनल कंपनीज. ओके, अगर कंट्री का, ओके सिमरन, आई विल कम टू योर क्वेश्चन. अगर कंट्री का जो रिसोर्सेस है, जो संपद है, उसको अगर एक्सप्लॉइट करते हैं मल्टीनेशनल एमएनसीज, अगर बाहर के कंपनीज आके इंडिया में जितने भी इंडिया का प्राकृतिक संपद है उसको अगर एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइट मतलब उसको अगर डिस्ट्रॉय करते हैं, तब भी प्रॉफिट नहीं होगा. सो एक्सप्लॉइटिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस इज आल्सो रॉन्ग. सो रह क्या गया? ऑप्शन बी रह गया, कार्बिंग ऑफ टैक्स इवेशन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज. सो अभी बताइए, अभी अगर वर्ड हम यूज करते हैं टैक्स इवेशन,
टैक्स इवेशन, टैक्स इवेशन मतलब क्या? टैक्स को छुपाना, टैक्स पे नहीं करना। जो लोग टैक्स पे नहीं करते हैं, टैक्स को, इनकम को छुपाते हैं ताकि टैक्स ना पे करना पड़े, उसको बोलते हैं टैक्स इवेशन। सो वो टैक्स इवेशन को अगर कर्बिंग, द मीनिंग ऑफ वर्ड कर्बिंग इज कंट्रोलिंग, मीनिंग curbing tax evasion means eliminating भी कह सकते हैं, eliminating tax evasion, it means eliminating tax evasion. So अगर टैक्स इवेशन को रोक सकते हैं, then obviously प्रॉफिट रिलेटेड होगा। टैक्स जो पे करना होता है, लोग पे नहीं करते हैं, इनकम को छुपाते हैं। सो इनकम को छुपाते हैं तो लॉस होगा कंट्री के लिए। अगर वो प्रॉब्लम जो है टैक्स इवेशन का, उसको अगर हटा दिया जाता है, देन ओबियसली इंडिया को कुछ प्रॉफिट होगा। सो हम लोगों को नॉलेज नहीं था बेसिक इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग है क्या। Then also by applying our general knowledge, by applying our common sense, हम लोगों ने करेक्ट आंसर को चूज किया। Now let's justify our answer. Base erosion and profit shifting refers to tax avoidance strategies that exploit gaps and mismatches in tax rules to artificially shift profits to low or no tax location. So क्या होता है? Shifting profit. Suppose you all know, आप लोगों को पता है कि कोई अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो उस सालों के लिए टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। कोई अगर हॉस्पिटल चलाते हैं तो अप टू सम इयर्स डोंट नीड टू पे एनी टैक्स। अगेन कुछ ऐसे जोन हैं जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। सो अगर उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई बिजनेस करते हैं एंड उसको प्रॉफिट भी मिलते हैं, देन ऑल्सो he is not taxable. So base erosion and profit shifting का मतलब क्या है? टैक्स को अवॉइड करना और प्रॉफिट को दूसरे जगह पे दिखाना जहां पे टैक्स नहीं। जहां पे टैक्स नहीं है उस जगह में प्रॉफिट दिखाना, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट दिखाने से भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सपोज one person earns profit by selling electronic items, तो उस प्रॉफिट को उन्होंने कहाँ दिखाया कि उन्होंने हॉस्पिटल में कहीं पे हॉस्पिटल बिजनेस से अर्न किया। सो हॉस्पिटल बिजनेस से अर्न करने में वो दे आर फ्री फ्रॉम टैक्स। सो ये होता है बेसिक इरोशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। सो हम लोगों का जो कॉमन सेंस अप्लाई किया था वो करेक्ट निकला। ओके, कम टू दिस क्वेश्चन। ओके, लेट मी गिव आंसर टू वन ऑफ आवर स्टूडेंट। फ्लैट में बैंक को ज्यादा प्रॉफिट होता है, रिड्यूसिंग में इंटरेस्ट फिक्स रहता है। यस। सो हाउसिंग लोन में क्या होता है? देयर आर टू टाइप ऑफ लोन्स। लोन दो प्रकार की होता है। एक होता है फिक्स रेट में, एक होता है रिड्यूसिंग रेट। सो फिक्स्ड रेट या रिड्यूसिंग रेट में इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होती। द थिंग इज दैट सपोज देयर इज टू लोन, फिक्स्ड रेट एंड देयर इज अ रिड्यूसिंग रेट। सो यहाँ पे क्या होता है? सपोज किसी ने रिड्यूसिंग रेट में 10 लाख का लोन लिया है एंड किसी ने फिक्स्ड रेट में लिया है 10 लाख का लोन। तो रिड्यूसिंग रेट में क्या होगा? आफ्टर पेइंग 1 EMI, सपोज लोन बन जाते हैं 9,95,000। एक EMI देने के बाद
लोन होता है 9,95,000। सो नेक्स्ट मंथ में इंटरेस्ट लगेगा अपॉन, नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, इंटरेस्ट विल बी अपॉन 9,95,000। दिस इज नोन एज योर रिड्यूसिंग रेट। जितना आपका लोन रिड्यूस होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। फिक्स रेट में क्या होता है, फर्स्ट मंथ में भी जो ईएमआई है वो अपॉन 10 लाख से लगेगा, अपॉन 10 लाख। सेकेंड मंथ में भी सेम 10 लाख। सो फिक्स रेट में क्या होता है, बैंक्स अर्न मोर प्रॉफिट, बैंक्स अर्न मोर प्रॉफिट। सो लेकिन आप लोग देखिएगा कि कोई भी नेशनलाइज बैंक में फिक्स रेट है नहीं अभी। फिक्स रेट का कंसेप्ट पहले प्राइवेट बैंक्स में था, अभी थोड़ा कम हो गया है। हाउसिंग लोन्स आर जनरली गिवन इन रिड्यूसिंग रेट्स, क्योंकि हाउसिंग का जो लोन्स होते हैं वो बहुत बड़े अमाउंट के होते हैं। सो बहुत बड़े अमाउंट का जो लोन्स होता है वो रिड्यूसिंग रेट में ही जनरली होते हैं। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. Swayam, an initiative of the government of India, aims at. So 4 options: promoting the self-help group in rural areas, providing financial and technical assistance to young startup entrepreneurs, promoting the education and health of adolescent girls, providing affordable and quality education to the citizens for free. So ऐसे क्वेश्चन में एक बात आप लोग याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन में जो योजना से रिलेटेड होता है, योजना, ये सब एक योजना है स्वयं, यहाँ पे आप कॉमन सेंस यूज नहीं कर सकते। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आप लोगों को योजना पढ़ना होगा। एटलीस्ट यू शुड नो कि कौन सा योजना किससे जुड़े हुए हैं। सो योजना गवर्नमेंट का जितना भी निकालते हैं सभी योजना को थोड़ा पढ़ना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज डी। स्वयं का जो इनिशिएटिव है ये है प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन फॉर फ्री। सिटीजन को क्वालिटी एजुकेशन देने का ये स्कीम है स्वयं स्कीम। So Yojana is very important for civil service preparation. So Swayam is an information technology platform which will host massive open online courses and provide high quality education on various subjects from school level, class 9 to 12, to undergraduate and postgraduate students covering all disciplines. So ये क्या है, ये IT प्लेटफॉर्म है जहां पे ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्सेस होगा, मतलब फ्री फॉर फ्रॉम क्लास 9 to 12 टू अंडरग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एंड ऑल द डिसिप्लिन्स, मतलब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों में क्लासेस मिलेंगे। Through this scheme, the ministry has proposed to provide high quality e-content to all college and university free of cost. So all the college students and university students को ई कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सके, इसलिए ये स्वयं स्कीम लॉन्च किया गया। सो दिस योजनास एंड स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये तो आप लोगों को पता है, ऑल यू नो, आई बिलीव कि सबको पता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, with reference to bitcoins sometimes seen in the news, which of the following statement is correct? So bitcoins are tracked by the central banks of the country. I want answer from your side. Okay, this question number 8 का answer चाहिए मुझे। So bitcoins are tracked by the central banks of the country. Statement 2, anyone with a bitcoin address can send and receive bitcoins from anyone else with a bitcoin address.
सपोज मेरे पास एक बिटकॉइन एड्रेस है और आप लोगों में से किसी के पास एक बिटकॉइन एड्रेस है, तो इफ आई नो योर बिटकॉइन एड्रेस आई कैन सेंड और आई कैन रिसीव बिटकॉइन. Online payments can be sent without either side knowing the identity of the other. So identity अगर पता भी नहीं है, then also we can do what? Online payment. So what will be the correct answer? You all are very much expert in this. That's why I want the answer from your side. First of all, bitcoins are not tracked by central banks. अभी भी central banks ने bitcoin को accept नहीं किया है. So statement 1 is wrong. So when statement 1 is wrong, option A and B cancel. Option A and B cancel. So anyone with a bitcoin address can send and receive bitcoin. Yes, this is correct. ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. So when we know कि statement 2 is correct, option C is also. So B क्या होगा. So B is the correct answer. Yes, all of you have given the correct answer. मुझे पता था, ये आप लोग को पता होगा. Okay, so anyways, B is the correct answer. यहाँ पे option statement 3 is also correct. So see, bitcoins can be sent directly to anyone, anywhere in the world. The only requirement is that you should have a bitcoin address of the recipient. The process does not require to reveal your identity. So identity नहीं चाहिए. So it is peer-to-peer transactions and take place between users directly without an intermediary. There is no intermediary, so it is not tracked by the central bank or any intermediary. यहाँ पे कुछ भी बीच में कुछ भी नहीं. User directly can transact here. So there is no intermediary and central bank ने अभी तक ये नहीं किया. Okay. So consider the following statement. There is a typing error. These three other statements. So, sorry, these two other statements. New Development Bank has been set up by APEC. The headquarters of New Development Bank is in Shanghai. So, New Development Bank is something आप लोगों को पढ़ना है. New Development बैंक, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है बिकॉज यूपीएससी ने पूछा है एंड हम लोगों का भी अभी क्या है. यस, दैट्स व्हाई मेनी टेररिस्ट्स. यस, हम लोगों का भी यूपीएससी पैटर्न हो गया. एक्सक्यूज मी. ओके, नाउ द न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज बीन सेट अप बाय एपेक. सो यहाँ पे the correct answer is your B is your correct answer. Headquarters of New Development Bank is in Shanghai, China. So New Development Bank is इसका है Shanghai. So it was created by BRICS in 2014 and headquarters China. So ये New Development Bank का पहला नाम क्या था? BRICS Development Bank. So it was started by BRICS. Now, what is the full form of BRICS? ये भी important. Can anyone tell me what is the full form of BRICS? किसको कहते हैं? Yes, very good. किसको कहते हैं BRICS countries? So, Brazil, Russia, India, China,
South Africa. So these 5 are your BRICS countries. Yes, very good. So BRICS, ये full form बहुत important है BRICS. और ब्रिक्स के जो रिसेंट मीटिंग्स वगैरह होता है वो भी पूछते हैं इन प्रीलिम्स कि कहाँ पे हुआ है लेटेस्ट मीटिंग्स ऑफ ब्रिक्स. Now come to this question number 10. So what are the purpose of government sovereign gold bond scheme and gold monetizations? First of all, let me tell you कि gold bond scheme क्या है. Gold bond scheme है क्या? So it is a scheme to invest in gold. गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. पहले क्या था, बिफोर गोल्ड बॉन्ड स्कीम, हम लोग को अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना होता है सो हम लोगों को क्या करना पड़ता था, वी नीड टू बाय फिजिकल गोल्ड. अगर हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड खरीदना पड़ता है, या तो बिस्किट या तो कुछ भी, ज्वेलरी कुछ भी. बट गोल्ड बॉन्ड स्कीम आने के बाद आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो डायरेक्टली आपको फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदने ही होगा. आप क्या कर सकते हो, एक बॉन्ड दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा जहां पे लिखा होगा कि आपने कितने अमाउंट का गोल्ड परचेज किया है एंड आपको कब कितने साल के बाद कितने मिलने वाला है. मतलब उतने साल के बाद मैच्योर होगा, मतलब उस सपोज 5 इयर्स के बाद मैच्योर होगा तो 5 इयर्स के बाद जो गोल्ड का वैल्यू होगा वो आपको मिल जाएगा. सो ये सब लिखा होगा इन वन सर्टिफिकेट. सो दिस इज नोन एज योर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, सेम थिंग. So the statements, come to the statements. To bring the idle gold lying with Indian households into the economy. So हम लोगों के घर में जितने भी गोल्ड पड़े हुए हैं, जो यूज किया है वो सही है, बट देयर आर इंडियन फैमिलीज में क्या होता है, बहुत गोल्ड ज्वेलरी देते हैं शादी के समय एंड आफ्टर दैट ऑल आर केप्ट इन द लॉकर में ही रहते हैं. सो दिस इज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में क्या होता है, अगर आप ओल्ड गोल्ड लाते हो देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मनी. मतलब अगर आप गोल्ड जमा करवाते हो बैंक में एंड आपका अगर वैल्यू आता है वहां पे 2 लाख रुपीज, देन यू कैन टेक 2 लाख रुपीज फ्रॉम बैंक उस गोल्ड के बदले में. और गोल्ड लोन भी ले सकते हैं आप लोग, गोल्ड लोन भी ले सकते हैं. सो घर में पड़े हुए आइडियल गोल्ड जितना है वो बैंक में डालने से क्या होगा, ये इकोनॉमी में आ जाएगा. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. To promote FDI in the gold and jewelry sector. No, FDI के साथ स्कीम, गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम का कोई रिलेशन है नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स करते हैं ओनली फॉर इंडियन सिटीजन. सो ऑप्शन 2 इज रॉन्ग. एंड अगर हम लोग को फिजिकल गोल्ड चाहिए, जब हम लोग गोल्ड खरीदते हैं फिजिकल गोल्ड ज्यादा चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं. बट अगर हम फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे ही नहीं तो हम लोग को इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा. सो टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट. सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी. यस, ऑल मेनी ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. So you see, the scheme does not intend to bring FDI in gold and jewelry sector, and by eliminating these only possible answers you have are either A and C. Both schemes aim at reducing physical demand of gold and thus bring down gold imports, which clearly tell us that the answer must be C. So elimination method भी use किया है. So we got the answer. Okay. Now ये क्वेश्चन हम लोगों ने 2015 का पेपर में भी देखा, 16 में भी देखा, 17 में भी देखा. सो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लाया है, आप लोगों को देना है ये आंसर. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज एम्ड एट
Option A, bringing the small entrepreneurs into formal financial system. Option B, providing loans to poor farmers for cultivating particular crops. Option C, providing pensions to old and destitute persons. Option D, funding the voluntary organizations involved in the promotion of skill development and employment generation. तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो था, it is mainly aimed at financial inclusion. So agar financial inclusion is the aim, then what will be the correct option? I want this answer from you because I have discussed this answer 2 times earlier. So correct answer here is your option A. Option A. Because financial inclusion होने के लिए लोगों को कहाँ पे लाना है? फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाना होगा. किसी को लोन देना, सपोज कोई चाहते हैं कि वो सरसों का खेती करेगा, उसको लोन दे दिया. दिस इज नॉट फाइनेंशियल इंक्लूजन. पेंशन देना, विच इज नॉट फाइनेंशियल इंक्लूजन. किसी एनजीओ को फंडिंग करना ताकि वो एनजीओ लोगों का स्किल डेवलपमेंट या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करे, दिस इज ऑल्सो नॉट फाइनेंशियल इंक्लूजन. सो फाइनेंशियल इंक्लूजन होना मतलब टू ब्रिंग द पॉपुलेशन टू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम. सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? ऑप्शन ए में ही वो दिया है, ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स टू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम. सो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है. सो प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या था? टू ब्रिंग द होल पॉपुलेशन टू फाइनेंशियल सिस्टम, एंड मुद्रा योजना इज टू ब्रिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स. सो मुद्रा योजना के अंदर लोन्स दिया जाता था टू द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स. एंड वो लोग क्या करते थे? पहले वो लोग किसी प्राइवेट पार्टी से लोन लेते थे. अभी उस मेन एम क्या है? टू ब्रिंग देम टू द बैंकिंग सिस्टम. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. ओके. ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय ग्लोबल फाइनेंशियल. यहाँ पे भी आप लोग कॉमन सेंस यूज कर सकते हो ऑप्शंस में. ऑप्शंस में कॉमन सेंस यूज कर सकते हो. ग्लोबल मतलब इंक्लूडिंग ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करते हैं? Yes, the correct answer is International Monetary Fund. देखिए, यूरोपियन सेंट्रल बैंक वो किसका रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा? ओनली यूरोप का? ये ओनली यूरोप का करेगा. अगर आरबीआई भी होता तो वो सिर्फ इंडिया का करता. तो ये ओनली यूरोप का करेगा. ग्लोबल कहाँ है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. सो ये बैंक क्या है? पैसा रिलेटेड नहीं है. ये क्या करते हैं? रिकंस्ट्रक्शन. सो ये लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश कर ही नहीं सकते. एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, दीज आर आल्सो नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस. ये इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट.
So correct answer is International Monetary Fund, IMF. क्योंकि IMF एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है which deals with global finance. So the Global Financial Stability Report provides an assessment of the global financial system and markets and addresses emerging market financing in a global context. It focuses on current market conditions, highlighting systematic issues that could pose a risk to financial stability and sustained market access by emerging market players. So ये क्या करते हैं कि कोई भी रिस्क अगर आने का संभावना है तो वो रिस्क को वो लोग पहले ही मिटिगेट कर देते हैं. ओके, दिस वन इज अगेन करंट अफेयर्स था 2016-17 में, फिर भी अभी जीके बन गया है. सो रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सो it is a minimum guaranteed pension है scheme mainly targeted at unorganized sector workers. So organized sector workers मतलब कौन है? जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं. So they are known as organized sector. So unorganized sector कौन होगा? जो फार्मर्स है, जो बिजनेस करते हैं, जिसका मतलब जो डेली लेबर करते हैं. सो उन लोगों को क्या कहेंगे हम लोग? अनऑर्गेनाइज्ड. सो ये एक ऐसा पेंशन स्कीम है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को टारगेट करते हैं. यस, करेक्ट. ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली कैन जॉइन दिस. ये कभी नहीं हो सकता है. कोई भी गवर्नमेंट स्कीम अगर आते हैं, ओनली वन मेंबर कैसे ज्वाइन करेगा? सो दिस इज रॉन्ग. सो 2 रॉन्ग होते ही ये गया, ये गया. Now come to 3. Same amount of pension is guaranteed for the spouse for life after subscriber date. So इसके लिए आप लोगों को थोड़ा अटल पेंशन योजना का जो मतलब स्कीम है, उस स्कीम को थोड़ा पढ़ना है. So इसमें सपोज मैंने अटल पेंशन योजना में ज्वाइन किया. सो मुझे जो पेंशन मिलने वाला है, अगर मेरा डेथ हो जाता है, अगर आई डाइज, इफ सपोज आई डाई, तो माय स्पाउस, माय हस्बैंड विल गेट द सेम पेंशन. इट इज ट्रू फॉर अटल पेंशन योजना. बट नॉर्मल पेंशन में क्या होता है? जो पेंशन मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब रिटायर्ड पर्सन को, अगर वो उसका डेथ हो जाता है तो उसका जो स्पाउस होता है उसको हाफ मिलता है पेंशन. बट अटल पेंशन योजना में सेम अमाउंट मिलेगा. सो हियर द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. You see, the yojana mainly addresses the longevity risk among the workers in unorganized sector and encourages them to voluntarily save for their retirement. Atal Pension Yojana is open to all bank account holders who are not members of any statutory social security scheme. स्टेट का किसी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में अगर एनरोल नहीं है तो बैंक अकाउंट होल्डर कैन ओपन. As per the Ministry of Finance, the spouse of the subscriber shall be entitled to receive the same pension amount as that of the subscriber until the death of the spouse. After death of both the subscriber and the spouse, the nominee of the subscriber shall be entitled to receive the pension as accumulated till 60 years of the subscriber. So, अगर जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो उसका भी डेट हो जाता है, अगर उसके स्पाउस का भी डेट हो जाता है तो नॉमिनी को मिलेगा. Now, which of the following are advantages of practicing drip irrigation? So, ये drip irrigation का question जो है, it is basically related to geography. But in our syllabus also, we have a chapter on irrigation. So, I thought to discuss this question. Now, first of all, let me tell you कि drip irrigation क्या है.
Let me draw a diagram. These are plants. Okay, these are plants. ऐसा प्लांट्स लगाया हुआ है, और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे पाइप्स फिटिंग किया जाता है, पाइप्स। और इन पाइप्स में यहाँ पे नोजल्स होते हैं, नोजल्स, जहां से वाटर निकल सकते हैं, जहां से वाटर निकल सकते हैं। सो दिस इज नोन एज ड्रिप इरिगेशन। मतलब इस पाइप से वाटर पास करते हैं, ऐसे वाटर पास कर देते हैं, एंड इन नोजल से पैरों को डायरेक्टली क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। I hope I will discuss in the classes also. So now come to the this one, weed. Weed मतलब grasses. जैसे जो ग्रास होता है ना, उसको कहते हैं weeds. Reduction in weed. So क्या होता है, इन पैरों के प्लांट्स के बीच में कभी कभी क्या हो जाता है, ऐसे ग्रासेस हो जाते हैं, जंगल जैसा हो जाता है, ऐसे ग्रासेस हो जाता है। सो स्टेटमेंट 1 ने कहा है कि ये ड्रिप इरिगेशन का एक एडवांटेज क्या है कि ये वीड रिडक्शन करते हैं। मतलब ये ग्रासेस कब उगेगा, अगर आप पानी ऐसे देते हो, अगर ऐसे पानी देते हो तो पानी कहाँ पे गिरेगा, इन सभी एरिया पे गिरेगा। सो यहाँ पे जैसे पानी गिरेगा, यहाँ पे भी ग्रासेस उगेगा, लेकिन पानी कहाँ से मिलते हैं, ओनली थ्रू द नोजल डायरेक्टली टू द प्लांट। जो साइड का एरिया है उसमें पानी नहीं जाता है, सो ये ग्रासेस ग्रो करने का कोई चांस नहीं। सो रिडक्शन इन वीड इज करेक्ट। रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी। सो अगर हम ऐसे, अगर पेड़ या है, अगर हम लोग वाटर ऐसे डाल रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे जो सॉइल एरिया है, ये पूरा का पूरा सॉइल एरिया सैलाइन रहेगा। सैलाइन मतलब मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर रहेगा। लेकिन अगर हम ठीक इस एरिया में पानी डालेंगे, इस एरिया में पानी डालेंगे, तो जो ये रिमेनिंग एरियाज जो है ये ड्राई रहेगा। सो सॉइल सैलिनिटी को भी रिड्यूस करते हैं। रिडक्शन इन सॉइल इरोशन। यस, अगर हम पानी ऐसे डालेंगे तो क्या होगा, सॉइल इधर का सॉइल इधर जा सकते हैं, बट डायरेक्टली यहाँ पे देगा तो क्या होगा, सॉइल यहीं पे ही रहेगा, सॉइल कहीं और नहीं जाएगा। सो दिस इज करेक्ट। नाउ ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये देखिए आप लोग, यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी। See, there may be some confusion in this statement. Generally, excessive logging and flooded fields suffer from high salinity. So, replacing conventional irrigation may help in curbing waterlogged soil salinity. So, soil salinity कम हो जाएगा। So, yes, यहाँ पे हम लोगों ने कहा है कि डायरेक्टली अगर हम लोग यहाँ पे वाटर देते हैं तो सॉइल सैलिनिटी डेफिनेटली गिरेगा। सॉइल सैलिनिटी, सॉइल जो मॉइस्चर है, सॉइल का जो मॉइस्चर है वो डेफिनेटली गिरेगा, क्योंकि सॉइल रिमेनिंग एरियाज में पानी नहीं आएगा। सो इससे क्या होता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होता है। बट इस क्वेश्चन में जनरल कॉन्सेप्ट लगाया है कि अगर हम इस एरिया में पानी डालते हैं, रोज अगर इस एरिया में पानी डालते रहते हैं थ्रू ड्रिप इरिगेशन, तो रिमेनिंग जो एरिया है ये भी उस पानी से मॉइस्चर अटेन करेगा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 को गलत ठहराया, क्योंकि रेगुलरली अगर पानी एक जगह पर देते हैं, देन द रिमेनिंग एरियाज will also attain moisture, वो भी सलाइन रहेगा। सो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 C इज द करेक्ट आंसर।
Yes, option C is the correct answer. Okay, move on to next question. Regarding DigiLocker, sometimes seen in the news, which of the following statements are correct? So DigiLocker. So statement 1 ने कहा है, it is a system offered by government under Digital India program. So हम लोगों का 2014 के बाद बहुत सारे डिजिटल इंडियन प्रोग्राम हुआ है, उसमें एक था डिजी लॉकर, जहां पे हम अपना डॉक्यूमेंट्स एज ए ई डॉक्यूमेंट करके रख सकते हैं। और अगर हम लोगों के पास फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम डिजी लॉकर से उस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। सो यस, it is a digital locker system offered by government under Digital India program. Correct. It allows you to access your e-document irrespective of your physical location. Correct. Yes, option C is the correct one. Very simple. Very simple question. So यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? Okay. Under this was released by Department of Electronics and Information Technology, Government of India. The space can be utilized for storing personal documents like university certificates, permanent account number cards, voter ID cards. Yes, sir. So, DigiLocker is हम लोग use करते हैं. We all know this. Okay. Question number 16. The Sustainable Development Goal were first proposed in 1972 by a global think tank called the Club of Rome. First of all, let me tell you, ये जो Sustainable Development Goal, or you can say as DZ, it is a concept of नीति आयोग। ये याद रखिएगा आपको। और नीति आयोग का क्या है कि कब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है? टू बी अचीव्ड by 2030. Now come to the statement. The Sustainable Development Goals were first proposed in 1972 by a global think tank called the Club of Rome. इसका है नीति आयोग का है. Sustainable Development Goal have to be achieved by 2030. Yes, correct. So option B is the correct answer. So it's the transforming our world 2030 agenda for sustainable development. So which is a option B is correct. Okay. So now come to question number 17. There has been a persistent deficit budget year after year. Which actions of the following can be taken by the government to reduce the deficit? So deficit budget कब होगा? जब revenue budget will be less than expenditure budget. Revenue budget is less than expenditure budget. तब क्या होगा? We will get a deficit budget. Revenue अगर ज्यादा होगा, कम होगा, expenditure ज्यादा होगा, then we will have a deficit. So deficit budget को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा? Reducing revenue expenditure. Yes. रेवेन्यू कम है, सो रेवेन्यू का जो खर्च है वो कम करना होगा. करेक्ट.
इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम। सो अगर न्यू वेलफेयर स्कीम लॉन्च करेगा तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो हम लोगों को डेफिसिट कम करना है। सो रेवेन्यू इज स्मॉलर देन एक्सपेंडिचर, सो हम लोग को क्या मिल रहा है, डेफिसिट। सो डेफिसिट को अगर कम करना है देन ओबियसली एक्सपेंडिचर को कम करना। सो वेलफेयर स्कीम इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। रेशनलाइजिंग सब्सिडी, सब्सिडी कहाँ पे आते हैं, वो भी एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। सो सब्सिडी स्टॉप नहीं करना है, बट सब्सिडी को थोड़ा रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज मतलब सब्सिडी को, मतलब जहां पे देना बहुत जरूरी है वहां पे देना चाहिए। अगर किसी सेक्टर में नहीं देने से भी होता है तो नहीं देना ही बेटर है। सो रेशनलाइजिंग सब्सिडी इज ऑल्सो करेक्ट। एंड रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी मतलब अगर यूएसए से हम लोग इंपोर्ट करते हैं किसी भी चीज, अगर यूएसए से इंडिया में आते हैं तो उसको कहते हैं इंपोर्ट। सो इंपोर्ट करने में क्या लगते हैं, ड्यूटीज, टैक्सेस एटसेट्रा। सो इंपोर्ट इज एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, इंपोर्ट इज एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। सो इंपोर्ट कर, अगर यूएसए से हम लोग कुछ चीज इंपोर्ट करने हैं, सपोज गुड्स लाते हैं, किसी भी गुड्स, तो हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, मनी, मे बी डॉलर, मनी देना पड़ेगा इंडिया को। सो इट इज एक्सपेंडिचर ओनली। सो अगर इस ड्यूटीज एंड टैक्सेस को कम कर देते हैं तो इंडिया क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करेगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करेगा उतना ही एक्सपेंडिचर बढ़ते जाएंगे। So reducing import is also wrong. So correct answer is option 3. These are not very tough questions. Okay, यहाँ पे सिर्फ अपना concept use कीजिएगा आप लोग. So you see statement 1 ने unnecessary revenue expenditure bloats the fiscal deficit, and since it forms the majority of government spending, its reduction has a very large effect on fiscal deficit. Statement 2 ने कहा it will increase the fiscal deficit. हाँ, अगर हम लोग statement 2 में क्या था, इंट्रोड्यूस न्यू स्कीम, इंट्रोड्यूस न्यू स्कीम करने से क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। सब्सिडीज को रेशनलाइज करना, सो सब्सिडी अगर रिडक्शन करते हैं इट विल कट डाउन फिस्कल डेफिसिट। अगर इंपोर्ट ड्यूटी को लेस कर देते हैं इट रिड्यूसेस टैक्स ब्रेक्स, इंक्रीज फिस्कल डेफिसिट। सो इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर देने से क्या होगा, ज्यादा इंपोर्ट होगा। दिस इज ऑल्सो एक्सपेंस फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कोई कंट्री हम लोगों से इंपोर्ट भी करते हैं तो उन लोगों को भी इंपोर्ट ड्यूटी पे करना होता है। सो अगर हम उस इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर देते हैं तो हम लोगों का, इंडियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू गिर जाएगा, और रेवेन्यू वैसे ही कम है और गिरने से क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, ये पेमेंट बैंक का है। दिस इज ऑल्सो अ इजी क्वेश्चन। So the establishment of payment banks is being allowed in India to promote financial inclusion. Which of the following statements are correct in this context? Mobile telephone companies and supermarket chains that are owned and controlled by residents are eligible to be a promoter of payment banks. So payment bank क्या-क्या है देखते हैं इंडिया में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स, एयरटेल पेमेंट mobile telephone companies and supermarket chains are owned and that are owned and controlled by residents are eligible to be promoter of payment. So option 1 is correct क्योंकि हम लोगों ने देखा है मोबाइल टेलीफोन कंपनीज
सो एयरटेल पेमेंट बैंक है. पेमेंट बैंक कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड. You always know that payment bank cannot give any loan. So जब पेमेंट बैंक कोई भी लोन नहीं दे सकते हैं तो वो कैसे क्रेडिट कार्ड इशू करेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लोन. सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. Payment bank cannot undertake lending activities. Yes, statement 3 is correct. So option B is the correct answer. So explanation की I think no जरूरत नहीं है. I have already explained it. Come to next question. Which one of the following is the purpose of UDAI, a scheme of the government? So next question is again on scheme. So UDAI scheme. So come to the options. First of all, let me tell you, ये UDAI जो scheme है, ये related to your reform in power distribution company. It's related to reforming power distribution company. So option number A ने क्या कहा है? Providing technical and financial assistance to startup entrepreneurs in the field of renewable sources of energy. So मैंने क्या कहा है? It's related to reforming power distribution. So option A is wrong. Providing electricity to every household in the country by 2018. This is also wrong. Replacing the coal-based power plants with natural gas, nuclear, solar, wind, and tidal power plants over a period of time. This is also wrong. Providing for financial turnaround and revival of power distribution company. This is correct. So option D is correct regarding UDAI scheme. Now, come to this. It is the Ujjal Discom Assurance Yojana. So, full form क्या है? Ujjwal Discom Assurance Yojana, where Discom stand for distribution companies. Discom is your distribution companies that are state-owned and suffering huge financial losses due to poor infrastructure, AT&C losses, misgovernance, low tariff, etc. So, ये जो companies जो loss face कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो लॉस फेस कर रहा था, उन लोगों का रिवाइवल करने के लिए ये उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना लाया गया. सो इट्स रिलेटेड टू रिफॉर्मिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी. ओके, कम टू दिस क्वेश्चन. With reference to IFC masala bonds sometimes seen in the news, which of the statements are correct? So masala bond. The International Finance Corporation, which offers these bonds, is an arm of World Bank. So, masala bond कौन issue करते हैं? First, let us know. Masala bond issues by International Finance Corporation. और ये International Finance Corporation है, जो है ये एक वर्ल्ड बैंक का एक ब्रांच है. सो ऑप्शन 1 is correct. They are rupee denominated bonds and are a source of debt financing for the public and private sector. So masala bonds से क्या होता है कि masala bonds are in rupees. ये bonds किस में रहते हैं? rupees में. और ये bonds कौन इशू कर सकते हैं? Both public and private sector can issue this bond.
सो अगर किसी पब्लिक को मतलब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होता है, देन गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इशू मसाला बॉन्ड्स जब पैसों की जरूरत होता है। एंड प्राइवेट पार्टी को भी अगर कभी चाहिए, प्राइवेट पार्टीज भी अगर पैसों की जरूरत होता है, देन ऑल्सो दे कैन ऑल्सो दिस वन दे कैन ऑल्सो इशू मसाला बॉन्ड। एंड उस बॉन्ड को जब पब्लिक खरीदते हैं तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट पार्टी हो, उन लोगों को सभी को क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने कहा था कि IFC इज एन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सिर्फ IFC ही नहीं, IBRD, IDA, IFC, MIGA and ICSI. These 5 are, ये कहाँ पे है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। IFC is a member of the World Bank Group and at the same time it's called as the World Bank's private sector lending arm. So IFC से क्या करते हैं, वर्ल्ड बैंक प्राइवेट सेक्टर को लोन देते हैं। क्यों लोन देते हैं? To ensure that any financing does not result in harm to communities and the environment. So लोन जब प्राइवेट सेक्टर को देते हैं तब वो देखते हैं कि उस प्राइवेट सेक्टर अगर लोन लेके किसी भी कम्युनिटी को हार्म कर सकते हैं या तो एनवायरनमेंट को हार्म कर सकते हैं तो वो लोन नहीं देते हैं। उन प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग करते हैं जहां पे किसी भी कम्युनिटी को हार्म नहीं होता है एंड एनवायरनमेंट को भी कोई हार्म नहीं होता है। So IFC has been issuing offshore rupee bonds known as masala bonds. They provide a new source of funding for Indian companies which benefit in the longer term for comparative pricing of bonds. And public भी masala bonds खरीद लेते हैं क्योंकि masala bonds are much profitable. उस बॉन्ड को अगर रखते हैं मैच्योर पीरियड के समय तक, then it's much profitable. Now this is again a very easy question. So there are 3 things. Which of the following are included in the capital budget of the government of India? So we already know that we have revenue budget and we have one called capital budget. Capital budget. So under revenue budget, we have revenue receipt and we have revenue expenditure. Under capital budget, we have capital receipt and capital expenditure. So come to the statement. Capital expenditure are those expenditure जो एक्सपेंडिचर करने से जो एक्सपेंडिचर करने से क्या होता है, गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट होता है। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर जिसको गवर्नमेंट जब करते हैं, गवर्नमेंट का कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं होता है। एंड कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच आर रिटर्नेबल। कैपिटल रिसिप्ट्स जितना भी होगा उसको रिटर्न करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को कैपिटल रिसिप्ट्स मिलेगा, गवर्नमेंट को वो रिटर्न करना है। एंड जितना भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स मिलता है उसको रिटर्न नहीं करना है। सो अगर गवर्नमेंट किसी को लोन देते हैं किसी और दूसरे स्टेट को, तो वो आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ कम टू द स्टेटमेंट। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स like roads, buildings, machinery, etc. comes under capital budget. Yes, correct. Loans received from foreign government. Yes, अगर इंडियन गवर्नमेंट को लोन मिलता है वो क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा। सो कैपिटल बजट के अंदर आएगा। Loans and advances granted to states and union territories. अगर कोई एक स्टेट किसी दूसरे स्टेट को लोन्स देते हैं तो वो कहाँ पे आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो
ये भी कैपिटल बजट के अंदर आएगा. So what will be the correct answer here? Option D is the correct answer. Clear? So this is the justification, this is the answer. So capital budget is an account of the assets as well as liabilities of the central government, which takes into consideration changes in capital, both capital expenditure and capital receipts. The main items of capital receipts are loan raised by the government from the public, which are called market borrowings, borrowing by the government from the Reserve Bank and commercial banks and other financial institutions through sale of treasury bills, loans received from foreign government and international organizations, and recoveries of loans granted by the central government. So, ये जितने भी loans आते हैं, all comes under capital receipts. Capital expenditure includes expenditure on the acquisition of land, building, machinery, equipment, investment in shares, and loans and advances by the central government to state and union territory government, PSUs and other parties. So 1 and 3 are correct. Very important for your prelims. Okay. Which of the following describe the term import cover, sometimes seen in the news? So it was a current affairs question of 2017. So import cover क्या है? It is the ratio of value of import to the gross domestic product of the country. So GDP or import का ratio? Import is to GDP ratio. First statement. It's the total value of import of a country in a year. So country का जितना भी import हुआ है साल में, उसका value है import cover. It is the ratio between the value of exports and that of imports between two countries. So दो country के बीच जितना भी export import हुआ है उसका ratio. And it is the number of months of imports that could be paid for by a country's international risk. So here option D is the correct answer. Option D is the correct answer. See, import cover measures the number of months of money available in the national bank to cover the cost of imports. So, अगर हम लोग import करते हैं, हम लोग अगर import cover क्या measure करते हैं कि इंडिया के पास कितना पैसा है और कितने महीने का import कर सकते हैं. This is known as import cover. So, जब गवर्नमेंट मेजर करते हैं कि सपोज इंडिया के जो नेशनल बैंक है वहां पे सपोज देयर आर मनी व्हिच कैन कवर 5 months ऑफ इनपुट. तो ये क्यों मेजर करते हैं? क्योंकि प्रिवेंशन ले सकते. अगर ऐसा सिचुएशन आ जाते हैं, ऐसा सिचुएशन कभी आ सकते हैं कि इंडिया ने इंपोर्ट कर लिया बट इंडिया के पास पैसा नहीं है उन इंपोर्ट को पे करने की. सो गवर्नमेंट पहले से ही तैयार होना चाहिए गवर्नमेंट कि अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हम पे कर पाएंगे या नहीं पाएंगे. सो इंपोर्ट कवर मेजर करते हैं ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि हम लोगों के पास जितना भी पैसा है उससे हम कितने महीने का इंपोर्ट कर सकते हैं. So ये क्यों करते हैं? This is to avoid BOP crisis, balance of payment crisis, so that early preventive action can be taken. So अगर ऐसा situation आ जाएगा कि इंडिया के पास there is no money to pay for imports, import किया इंडिया ने बट पैसा नहीं है उसको पे करने के लिए, तो उस situation को क्या कहते हैं? Balance of payment crisis. BOP crisis, balance of payment crisis. मतलब सिचुएशन मतलब कैसा
कि सपोज किसी ने एक दुकान से 4000 रुपीज का सामान लाया एंड उस सामान लाने के बाद पता चला कि उसके पास 4000 रुपीज है नहीं, सो ये क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पेमेंट का बैलेंस रह जाएगा। सो इंडिया के साथ भी वैसा ही होगा एंड इंडिया विल फेस बीओपी क्राइसिस, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। सो इंपोर्ट कवर इज इंपॉर्टेंट। इंपोर्ट कवर से पता चलता है कि कितने महीने का हमारे पास पैसा है इंपोर्ट करने के लिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। ओके, so with reference to Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, consider the following statement. So Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. So Fasal Bima Yojana, when you hear the name, उससे क्या पता चलता है? It is an insurance scheme. It is an insurance scheme for crops of the farmers. So ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, ये इट्स एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर क्रॉप्स ऑफ द फार्मर्स। सो ये किस मतलब सपोज ये कौन से पीरियड को कवर करते हैं? सपोज फार्मर ने फसल उगाया, उस समय भी अगर फसल खराब हो जाता है, देन ऑल्सो द इंश्योरेंस कंपनी विल पे द अमाउंट। अगर फसल काट के लाने के बाद अगर रेन्स के वजह से फसल खराब हो जाता है, अगर सडनली साइक्लोन्स आ जाते हैं, पूरे फसल को धो के ले जाता है, या तो घर में अगर जहां पे भी रखते हैं वहां से धो के लेके जाते हैं, या तो फसल खराब हो जाते हैं ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू साइक्लोन, ड्यू टू अनसीजनल रेन्स, तब भी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। बट उसके लिए फार्मर लोगों को एक प्रीमियम पे करना होता है। सो प्रीमियम इज डिफरेंट फॉर रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। सो हम लोगों का दो टाइप का क्रॉप है, एक है रबी क्रॉप, एक रबी फॉर विंटर सीजन, एक है खरीफ फॉर मॉनसून सीजन। सो एंड वन इज जेड क्रॉप फॉर समर सीजन। समर सीजन के लिए जेड क्रॉप है, रबी फॉर विंटर सीजन, खरीफ फॉर मॉनसून सीजन। सो अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग रेट पे करना होता है, मतलब प्रीमियम का रेट अलग अलग होता है। सो यू सी, अंडर दिस स्कीम फार्मर्स विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप दे कल्टिवेट इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। सो मैंने क्या कहा है, अलग अलग, नॉट यूनिफॉर्म प्रीमियम, अलग अलग प्रीमियम फॉर नॉट एनी क्रॉप, फॉर रबी, खरीफ एंड जेड क्रॉप, अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग प्रीमियम। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 is wrong. The scheme covers post harvest losses arising out of cyclones and unseasonal. Yes, this is correct. So option B is the correct answer here. You see, farmers' premium has been kept at a maximum of 2% for food grains and oilseeds, and up to 5% for horticulture and cotton crops. So it is different for different crops. You see, और statement 1 ने क्या कहा था, 2%, uniform rate of 2% for any kind of crop. But there are different. Post-harvest losses coverage is available only up to a maximum period of 2 weeks from harvesting for those crops which are allowed to dry in and cut and spread condition in the field after harvesting against specific perils of cyclone and cyclonic rains. Suppose आप लोगों को पता है ना कि जब राइस काट के लाते हैं फिर उसको फील्ड में सुखाया जाता है राइस को। सो उस समय अगर साइक्लोन आ जाते हैं या उस समय अगर रेन्स होते हैं और क्रॉप्स को खराब कर देते हैं, तब भी
उन losses भी insurance company cover करे. So फसल बीमा योजना is different premium for different crop, and this one post harvest losses is also covered. So then that's all for today. So again, what I want is that आप लोग हम लोगों का ये जो initiative है for doing the previous year question, if you are thinking that you are benefiting from this discussion, आप लोगों को अगर थोड़ा भी help हो रहा है, then please share this, because the more you share, the more you care. मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका एक शेयर से किसी नीडी एक स्टूडेंट को ये सब मिल जाएगा. So kindly share all this, and if you are really benefiting, give it a like. And always subscribe to our channel, because then only you'll be getting this type of content. So once again, thank you everyone. Good night.